Hello friend, welcome back to JSP lecture. So today I am starting the lecture how to execute JSP program in Apache Tomcat. So I am giving I am presenting here the process of execution in Apache Tomcat. So step wise I am explaining it. So first of all, you have to install Java in your computer. And in step 2, you need to install Apache Tomcat, and at the time of installation it will be by default recognize JRE path if Java is already installed. So you have to install first, you have to install the Java, and in second step you have to install Apache Tomcat. Then uh, uh, these are the two steps, and you have to follow these two steps. So Java, you know how to install the Java, तो मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ. So I am coming on the second step. मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि Java you have already Java. So now the second step, Apache Tomcat, how to install Apache Tomcat on your computer. So what you have to do, you have to write the you have to open the Google, and you have to Google Apache Tomcat free download, and there you will find this window. At for this window, I have given here two arrow. The first arrow is showing different version of Apache. So you have to select Tomcat 9, and it is latest version. Mid or maybe it may be some new version also. तो जो भी इस समय जो प्रेजेंटली जो भी नया वर्जन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे. एंड हियर यू विल फाइंड अपाचे टॉमकैट 9 सॉफ्टवेयर डाउनलोड. सो ये आपको विंडो इस तरह की ये शो करेगा. एंड देन यू हैव टू कम हियर, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल फाइंड हियर द हेडिंग कोर, एंड इनसाइड कोर यू विल फाइंड 32-bit oblique 64-bit Windows Service Installer. So as per your window, you will select any one of these 5 link. So this is the last link, and you can use this link. तो अगर आपका 32-bit या 64-bit विंडो सर्विस है तो ये लिंक आप यूज कर सकते हैं. एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, देन इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ टॉमकैट इंस्टॉलेशन. तो इस तरह से ये टॉमकैट को इंस्टॉल करने की प्रोसेस पे आ जाएगा. तो यहाँ से आपका ये टॉमकैट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया. इंस्टॉल करेंगे तो अब नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन, when your installation will complete, then you have to move on monitor Tomcat. Now go to start program Apache Tomcat and monitor Tomcat. इसका मैं snapshot दे रहा हूँ यहाँ पे. You have to go start and then programs. इसके बाद programs के अंदर Apache Tomcat 9.0 Tomcat 9, and then monitor Tomcat. You have to move here, and I have indicated it by this arrow. तो फिर से देखिएगा कि start program Apache Tomcat and monitor Tomcat. You have to move here on monitor Tomcat. अब monitor Tomcat में जाने के बाद स्टेप 4 ये है कि क्लिक ऑन द आइकन स्टार्ट. हियर यू हैव व्हेन यू विल सेलेक्ट मॉनिटर टॉमकैट, ये मॉनिटर टॉमकैट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, you will have this window, and in this window you have to click on start, because Apache Tomcat is a server, web server. So you have to start it, and then after this action you will do the JSP, you will write the JSP program, and then you will execute these programs. So step 4, click on the icon and start आइकन. मॉनिटर टॉमकैट पे क्लिक किया, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे. यू कैन सी फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स, एंड हियर यू हैव स्टार्ट. तो अब आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा. जब तक आप जेएसपी में प्रोग्रामिंग करेंगे तब तक ये स्टार्ट ही रहेगा. जैसे आपने प्रोग्राम करना बंद कर दिया तो इसको स्टॉप कर देंगे. यहाँ पे स्टॉप बटन है, या पॉज बटन है, या रिस्टार्ट बटन है. मीन्स दिस 4 बटन
रिलेटेड टू द सर्वर। तो ये सर्वर को स्टार्ट करने के लिए बटन है, जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक जेएसपी के प्रोग्राम नहीं होंगे। स्टार्ट करके यू हैव टू लीव इट, यानी कि इसको छोड़ दीजिए स्टार्ट करके, तब फिर आप उस पर जा करके ब्राउजर पे जाकर के इसको रन कराएंगे जेएसपी प्रोग्राम्स को। अब नाउ स्टेप 5, ओपन ब्राउजर। यू हैव टू ओपन ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आपके पास है, आइदर इट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। स्टेप 6, टाइप http://localhost 8080 on address bar and press enter. Same can be seen in the next slide. तो जैसे आप ये लिखेंगे http://localhost 8080, देन यू विल फाइंड, जैसे ये लिखते हैं आप तो आप ये विंडो आप देखेंगे, लोकल होस्ट लिखते ही आपको ये विंडो मिलेगी। अगर ये विंडो नहीं आ रही है, if this window is not coming, so it means there is some error in your installation. तो आप फिर से देखिएगा, मॉनिटर टॉमकैट पे आपने क्लिक किया, then you will find this screen and you have to start the server. जैसे ही आपने सर्वर स्टार्ट किया, then you have to verify that your server is running or not. So you have to open your browser and you have to write http://localhost 8080, ये आपको ऊपर लिखना होगा जहाँ पे हम वेबसाइट का नेम लिखते हैं, इस पोजीशन पे यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे ये लिखेंगे और इसको क्लिक करते ही you will find this screen, it means everything is okay. तो स्टेप 7, it will show the tomcat as shown below, if not then try again. इसका मतलब है कि it will show tomcat, इसका मतलब tomcat आपका ओके है। if not अगर नहीं आ रहा है, then try again and maybe a problem in installation and you are not following above step correctly. इसका मतलब ऊपर वाले स्टेप आपने करेक्टली फॉलो नहीं किए हैं और आपका टॉमकैट इंस्टॉल नहीं हो पाया, तो ये वेरीफाई कर लेगा कि आपका टॉमकैट इंस्टॉल है या नहीं है। सो नाउ अब हम प्रोग्राम के लिए आते हैं कि प्रोग्राम, हाउ टू राइट द प्रोग्राम। अब टॉमकैट आपका इंस्टॉल हो गया और अब हमारा कंप्यूटर रेडी है टू एग्जीक्यूट द JSP programs. So now see the steps. Now go to C drive and then again go to program file and then go Apache software foundation and inside this Tomcat 9 and inside this web apps. You can see this here also. You have to move computer and then C drive, then program files, then Apache software foundation, then Tomcat 9.0, and inside Tomcat 9.0 you have to select web apps directory. तो इस तरह से हम सी डायरेक्टरी के अंदर प्रोग्राम फाइल डायरेक्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे या डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, उसके अंदर अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फोल्डर पे जाएंगे, उसके बाद टॉमकैट 9 फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके बाद वेब एप्स के अंदर जाएंगे। तो ये फाइनली विल बी इन वेब एप्स फोल्डर और नेविगेट वेयर यू हैव इंस्टॉल्ड अपाचे टॉमकैट, या फिर और कहीं अगर डी ड्राइव में है तो वहां नेविगेट करेंगे, बट यू हैव टू मूव ऑन वेब एप्स डायरेक्टरी। So this is web apps directory we have been on, now we are in web apps directory. तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर कंप्यूटर C, local type C, then program file, then Apache software foundation, then Tomcat 9.0, and inside Tomcat 9.0 you have web apps directory and you have to move in this directory, and inside this directory you can create your own directory. अब आपको जो भी प्रोग्राम बनाना है, यू हैव टू क्रिएट एवरी JSP प्रोग्राम इन वेब एप्स। तो डायरेक्टली वेब यू कैन क्रिएट एनी JSP प्रोग्राम डायरेक्टली ऑन वेब एप्स, और यू कैन क्रिएट एनी डायरेक्टरी एंड इनसाइड दैट डायरेक्टरी यू कैन क्रिएट JSP प्रोग्राम्स। तो मेक न्यू फोल्डर विच यू वांट टू रन इन JSP, फॉर एग्जाम्पल एप्स। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हम डायरेक्टली यहाँ भी बना सकते हैं, आप यहाँ भी बना करके देख लीजिएगा। एंड but in this case we have mentioned here apps directory। तो हम एक नया फोल्डर या नई फोल्डर, विंडोज में इसको फोल्डर बोलते हैं, डॉस में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो सो यू हैव टू क्रिएट apps directory and inside this apps directory now inside the web apps we have a new directory that is called apps directory, and we'll move on apps directory. First we have create this directory or this folder, then we will move on inside this apps and we will write a program inside this apps directory।
तो एप्स डायरेक्टरी के अंदर ये जो एप्स डायरेक्टरी है, APPS डायरेक्टरी है या फोल्डर है, इसके अंदर हम प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, JSP के प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम विल बी इनसाइड। अब ये प्रोग्राम कैसे बनेंगे, तो विच एडिटर इज यूज फॉर टू राइट दिस प्रोग्राम, तो यू कैन यूज नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं, और कोई और एडिटर, इसके अलावा कोई भी एडिटर, आप यूनिक्स में है तो यूनिक्स के एडिटर का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे VI एडिटर होता है, कोई और भी एडिटर हम यूज कर सकते हैं। सो इन दिस केस वी आर यूजिंग notepad, and the extension of the file will be .jsp. So step 10, create text file and name it, ये text file बनानी है, and name it app1.jsp, but the extension of that text file will be JSP, and use the code shown below. तो मैंने I have explained you some अदर कोड ऑल्सो, तो उनको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सो वी हैव रिटन दिस प्रोग्राम, दिस इज JSP प्रोग्राम, you can see the tag of JSP. So this is HTML, then head, inside head we have given one title, blog post Apache Tomcat server, and then body, inside body we have written JSP code. So this is command line, percentage and double dash represent the comments, and this will show the processing element. This is also called a scriptlet, and inside this scriptlet we can write out.println. Either we will write out.println और परसेंटेज इक्वल साइन, हम यहाँ पे परसेंटेज इक्वल साइन से भी प्रिंट कर सकते हैं किसी चीज को, और out.println की हेल्प से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। However in Java we have to write system.out.println, तो यहाँ पे system.out.println लिख करके केवल out.println लिखा जाता है JSP में, और hello world is the message which we want to display. And again we will close this percentage, this JSP tag, and this is end, and this is again comment, and body will be closed, and HTML will be closed. So this is the complete program of JSP. Now we will save this program, and we have app1.jsp. Inside app directory we have app1.jsp. So you can see here कि we are inside apps. तो हम इस तरह से C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर थे, उसके अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर थे, उसके अंदर टॉमकैट 9 और वेब एप्स, उसके अंदर एप्स के अंदर हमने app1.jsp फाइल क्रिएट की। app1.jsp is now ready, and you can see it. I have given the snapshot of app1.jsp. You can see app1.jsp here, and now how to execute this app1.jsp. So we have to write on browser. अब हम ब्राउजर पे आते हैं, तो ब्राउजर पे लिखते हैं localhost:8080 apps 8080 लोकल होस्ट, ये डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, वेब एप्स डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको यहाँ वो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू राइट ओनली localhost:8080 डायरेक्टली, इट विल मूव ऑन web apps directory, and inside this directory we have apps directory, and inside app directory we have the file app1.jsp. so directly we will execute this file, and this will give the result hello world. तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि now running your folder apps as shown above, you have to go localhost: वही प्रोसेस यहाँ पे है कि localhost:8080 and folder name apps. so किसी भी ब्राउजर पे है तो इस तरह से आ जाएगा http://localhost:8080/apps/app1.jsp. The program will run successfully as shown below in the text side. Now you can successfully try running JSP with Apache Tomcat server. Ensure that the server must be start mode as per step number 4. ये आपको याद रखना है. I have underlined it कि your server must be start mode. आपको फिर से मैं उस स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ where we have started, we have start button. जो ये स्टार्ट बटन है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर किस मोड पर आ जाएगा, अपाचे टॉमकैट सर्वर इज इन स्टार्ट मोड. ये स्टार्ट होना चाहिए तभी प्रोग्राम रन होगा. सो वी हैव गिवन हियर the snapshot of the output. So we have written here apps/app1.jsp
JSP. So when we will write this statement, this will execute the code, and this code will execute on server, and we are giving it from ब्राउजर से हम इस कोड को लिख रहे हैं, और रन कहाँ पे हो रहा है, सर्वर पे रन हो रहा है, और सर्वर उसको रिप्लाई करके हमारे जो हमारा ये ब्राउजर है उस ब्राउजर पे इसको डिस्प्ले कर देगा, बट द प्रोग्राम इज इन सर्वर. तो अगर सेम सिस्टम में है, देन वी विल राइट हियर लोकल होस्ट. तो ये हम लोकल होस्ट क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग इन सेम कंप्यूटर, because the web server Apache Tomcat is in our computer, our laptop or our desktop. Suppose this web server, this Apache Tomcat is in different computer. अगर ये कहीं remote computer में, कहीं दूर ये रखा हुआ है किसी दूसरे computer पे, then we will have to write the address of that computer in place of localhost. Localhost means local computer, जिस computer पर हम work कर रहे हैं, same computer having browser and same computer having the web server. So अगर हम किसी दूसरे कंप्यूटर को लेते हैं, किसी और लोकेशन, रिमोट लोकेशन पर रखे हुए कंप्यूटर पे सर्वर को एक्सेस करते हैं, और वहां पे हमारा JSP कोड है, तो देन इन दैट केस वी विल राइट हियर द एड्रेस ऑफ दैट सिस्टम. तो लोकल होस्ट ना लिख करके उस सिस्टम का नेम लिखा जाएगा जो सिस्टम हम लिंक कर रहे हैं, एंड 8080 इज द पोर्ट, उस सिस्टम के पोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे डिफॉल्ट सिस्टम का पोर्ट भी 8080. इट मे बी डिफरेंट, द पोर्ट मे बी डिफरेंट व्हेन वी कनेक्ट विद अदर सिस्टम, देन वी राइट द पोर्ट ऑफ दैट सिस्टम कि जिससे हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं. So this is the complete process of execution of JSP program in Apache Tomcat, but we can use some different method also. We can use NetBeans to execute the program of JSP, and different server can be used to execute the JSP program. So this is the method of Apache Tomcat, and Apache is most popular web server of this family. So that's why I have given the example of Apache Tomcat. So thank you very much. In next class I will explain you about the table, how to create table in JSP and how to manipulate tables in JSP. So finally, thank you very much.